सभापति जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी. Yes, what is? I'll call you. What is your problem? What is your problem? Point of order. Are you on a point of order? Yes, on business. What is the point of order, Bolli? Sir, Point of order. I will allow you. I'll call you. Sit down. Now you will have sit down. What is your point of order? point of order, sir. Arey yaar. Now all of you, order. Sit down, all of you. No, don't talk like this. Sit down. What? I'll call you also. Jaldi. Point of order, sir, is on the revised list of business. On the revised list of business. So I'm on Rule 29. But here's my point, sir. Here's my point. Yeah. Please hear me out. Yeah. Sir, today being Friday, Mantri ji. Yeah. Today being Friday, there is a list of, I think, about 11 private members' bills. And after that, the first item listed under government legislative business is the Finance Bill 2017. Yeah. Now, in the Business Advisory Committee meeting or the morning meeting, there is some informal agreement sometimes reached. Yeah. My appeal to this government, sir, through you, is that on Friday, not like the enemy property bill where it was listed and everyone else here was taken by surprise. So in the spirit of understanding between the government and the opposition, the enemy property bill was taken up after the private members' bills when there were 4 members in this house. When it was collapsed. Sir, 1 minute. You should So, say sir, full truth. Yes. Say full truth. When it was collapsed. I am making the point now that today there are 11 private members' bills, collapsed or no collapsed. The appreciation. I can assure you. That I understood your point. I can assure you. Bill I understood. Will not be yes. So I can assure you one thing, and I understood the point. No, sir, I haven't finished. One more point, sir. After private members' bills, this is the understanding which we all have. After the private members' bills, not to take up this legislation, that is the spirit we are appealing to this government. No. You see, now, Derek ji, I got your point. Your point is that finance bill should not be taken up after private members bill, even if private members bill collapses. Okay? I can assure you that. That is assured for today. In any case, that assurance I am giving, we will not take finance bill. No, that is given. It's not about the No, broader point we will discuss later. It's not about the finance That, bill. no, that is a disputed point. No, that we can decide later. That is a disputed point that we will take later because I have very definite view on that. That if a private members bill collapse, the chair cannot suo moto adjourn the house. Chair has to take the business. Collapses. But after 5 p.m., no problem. We can adjourn. Today also I say after 5 p.m. we will adjourn. And for today, I am giving the assurance, being it finance bill, I will not take it up. I continue. Now, what is your, Subramanian Reddy, what is your problem? Sir, yesterday night, again in America, one software engineer's wife and son were killed brutally in America. Again in America? Again America. So, My actually, My Narra Hanuman Rao, a software engineer from Mr. Naqvi, in Andhra Pradesh. please listen to this. Some Very serious matter. Some Indians are again killed in USA yesterday. One Narra Hanuman Rao, software engineer who is working for last 12 years in America, who belongs to Andhra Pradesh, when he came back from duty, he found his wife and 6-year son were found to be killed brutally by some unknown people. So it's a serious matter. 3 days back, Sushma Swaraj assured that they will protect, they will take all efforts. But this is very dangerous. Just 2 weeks back, 2 people were killed. Again, 2 people again killed yesterday night means this. What I want is our Prime Minister Narendra Modi ji must take with the President of America and take it very seriously. As I told that day, America being such a modern country and such a big resources and strategy plan, how they could not know who is behind this, how this motivation, why the killing is going on. It should be taken up at the highest level. मेंबर मिस्टर रेड्डी ने इस इशू को उस समय भी उठाया था और सुषमा जी ने बहुत कैटेगरिकली इस मुद्दे पर जो भी अमेरिका में रह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो भी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा
और उनकी सुरक्षा के प्रति जो है वो संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम। ये स्पेसिफिक इशू जो इन्होंने ये इंसिडेंट बताया है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। Convey to External Affairs Minister should be conveyed immediately for further action, and she may be requested to inform the House the action. What action is taken? Now, okay. Point of order. No. Okay, that is all right. Now, special mention, special. Take Anthony. You want? Sir, I think No, zero hour I have to that take. has been raised. No, Minister gave assurance. What- No, minute. No, 0 hour I have to take. Please. No, Minister gave assurance, then why do you speak on that? Please hear me. No, but how can I, 0 hour there are 11 members are waiting and pressuring me. Thank the chair that you have registered the seriousness of the matter and the government has also responded Which one? on this particular That is matter. already, yeah. Sir, please. No, you are cutting it. Sir, please. Why do you do it? No, this is, see, I have the pressure from so many. Unless and No, you cannot repeat it again. Minister has I'm given not it. No, sit down. repeating. No, why do you say sit down? I'm not No. repeating. No, what is this? It doesn't mean that on every subject you should speak. No, Minister responded and then again you are standing because, No. see, there are 11 MPs sitting and crying for this. I know their pressure. They are raising and you see. So why do you do it? Why do you see it again? It is already raised. No point of order. Sit down. I said it should be taken at the highest level. I said here. And you didn't hear that. I said from the chair. I said from the chair that it should be taken at the highest level. मैंने बोला है. No, Miss Dola Sen. No, please. No, Miss Dola Sen. I am not allowing that. Miss Dola Sen. I am not allowing that. See, some people give see, ordinary members, they give notice. And those who do not give notice, simply raise. Point of order. And this is not the way. Sit down. No, I am not allowing. Mr. Dawson, I got to protect the interest of the members. Those who give notice. You don't give a notice and come here and raise point of order and create problem. I don't agree with that. Mr. Dawson. Deputy Chairman, sir, thanks Please. for giving me chance to deliver some points in 0 hour. My subject Jaldi bolo. My subject today is regarding families affected by Sardar Sarovar project. Many of them are Adivasis. Sir, many families affected by Sardar Sarovar project are still residing in the submergence area spread over 214 kilometers as on today. Many schools, dispensaries, dharmashalas, government offices, rationing shops, other public amenities, temples, mosques, other religious and cultural centers and monuments, shops, markets and panchayat are yet to be shifted from villages in submergence to new sites. Many families from Madhya Pradesh who were declared as Sardar Sarovar affected since 1980s are now excluded from backwater level affected category, even when most of their properties are already acquired and transferred in the name of the Narmada authority. Not only that, a number of Sardar Sarovar affected Adivasis from Maharashtra are also yet to get any or all of the agricultural land, house plot allotted with titles and amenities in place of RR sites in their possession and yet to shift to new sites. Thousands of Sardar Sarovar affected handless families in Madhya Pradesh, including fishermen, potters, laborers, shopkeepers and artisans, have reportedly not been granted rehabilitation benefits. It is also ironical that no concrete action has yet been taken against the middlemen and officials who are held responsible for more than 1,500 fake sale deeds and massive corruption in other aspects of rehabilitation. And their offences are recorded by Justice Jha Commission after 7 years
long inquiry. Sir, the most alarming fact is that huge quantity of ponded water from Sardar Sarovar Reservoir is allocated to the Coca-Cola factory and car industries like Nano and Ford, depriving the people living in the vast municipal areas of Gujarat from adequate drinking water, particularly in Kutch and Saurashtra. I demand that a white paper is published by the central government on the impact of Sardar Sarovar project. Thank you, sir. Thank you. Srimati Kashan Parveen. Yes, as all those who associated. बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय। आज मैं सदन में आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने जा रही हूं। एक और हम बच्चियों और औरतों के मान और सम्मान, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो लैंगिक असमानता पर कानूनी व्यवस्था तथा सामाजिक संवेदनहीनता भारी पड़ती दिख रही है। ये समाज में सबसे बड़ी समस्या में से एक है। इसकी मार सबसे ज्यादा लड़कियों और औरतों पर पड़ रही है। इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। बेशक स्थिति बदल रही है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या आज भी बंद नहीं हुई है। इसकी रोक के लिए एक तरफ आवाज उठाई जाती है तो कड़े कानून बनाए जाते हैं, पर दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कन्या भ्रूण हत्या की जांच तथा भ्रूण हत्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कई बार निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद 22 मार्च को अखबार में यह खबर आई है कि दिल्ली के बड़कावाला गांव में भ्रूण परीक्षण गिरोह पकड़ा गया है। ये वही गिरोह है जो 1.5 वर्ष पहले इसी अपराध में पकड़ा गया था। जेल जाने के बाद भी सारे डर और खौफ को खत्म करके फिर भी ये गलत काम और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इनकी हिम्मत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। कुछ नर्सिंग होम में सिर्फ लड़के ही जन्म लेते हैं। मैं कहीं की बात और नहीं करती, दिल्ली में ही देख लीजिए। दक्षिण दिल्ली में ऐसे अस्पतालों की संख्या ज्यादा है। यहाँ 18 नर्सिंग होम ऐसे हैं जहाँ वर्ष 15-16 के दौरान कुल 3456 बच्चों ने जन्म लिया है। इसमें 3123 लड़के हैं और मात्र 333 लड़कियां हैं। यही हाल अन्य बड़े शहरों का भी है। क्या हम इस पर हम संजीदा हैं, संवेदनशील हैं? मैं एक बात, आखिर कब तक लड़कियां गर्भ में मरती रहेंगी? इसे बचाने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर एक निगरानी कमेटी का गठन कराया जाए, जिसे सिर्फ बेटियां हैं उनके माता पिता को उनके लालन पालन में विशेष सुविधा मिले। अगर उनके माता पिता बैंक से लड़कियों की पढ़ाई, इलाज या विवाह के लिए लोन लेते हैं तो उनके ब्याज दर में कम लिया जाए और साथ ही साथ इनकम टैक्स में भी इन्हें छूट मिले। ऐसा सरकार प्रबंधन करे। अगर माता पिता सरकारी सेवक हैं तो उनके पदोन्नति में भी उनका लाभ मिले। आखिर में मैं एक शेर के माध्यम से उन बेटियों को जो गर्भ में मार दी जाती हैं, उन बेबस मजबूर औरतों के लिए जिनके गर्भ में बेटियों को नाश किया जाता है, उनके दर्द को एक शेर के माध्यम से मैं सदन में रखना चाहूंगी कि मुरझाए हुए फूल की तकदीर हूँ, लेकिन मुरझाए हुए फूल की तकदीर हूँ, लेकिन चुप जाऊं किसी दिल में वो काटा तो नहीं हूँ। Okay. Yeah, everybody associates maybe on a very important issue. Sri Tabak Sen. Deputy Chairman, sir, I rise here to draw the attention of the government and as well as this House to an alarming phenomena of increasing pendency of the industrial disputes throughout the country, both in the central sector and also in the state sector. If we see, even for the central sector alone, involving only 70 lakh workers, which represent hardly 1% of the country's non-agricultural workforce and around 10% of the organized sector workforce, if we see for them, the pendency of the cases increased and it is now 13,165. And if you see last 3-4 years, the figure is hovering from 12,000 to 15,000. That means the issues are coming up and not getting settled. And if we see as per the government statement, the central government industrial tribunals in place, if we see in many places, the presiding officer is not there. Particularly, हैरानी का बात यह है
that in my state, Calcutta, in the Central Government Industrial Tribunal, the presiding officer and secretary to the court, it is not there for last 10 months in a place like Calcutta, where industrial disputes are quite high. In a place like Dhanbad, the presiding officer is not there, Dhanbad too. Presiding officer is absent. In a place like Ahmedabad, Nagpur, particularly the area where industries are more, Chandigarh, the post of presiding officer are lying absent, leading to rising of the pendency and its impact reflection on the industrial relation in the workplace, finally affecting, increasing industrial unrest and affecting productivity. I think the government must give a serious thought on this, otherwise, and it is not just a failure. If we say it is a failure, okay, the vacancy is there, not getting proper man, it is not like that. If you see the expenditure pattern of the country, pattern of the respective government, only in central sector, let me tell you, on the industrial relations and the enforcement of labor law, the expenditure allocated by budget, at least more than 45 to 50% are lying unspent every year since last 5 years. I am not particularly pointing a particular government, particularly on the issue of industrial relations and also enforcement of mechanism. These are all involving these labor commissioners, then CGITs and all these. The budget allocated is remaining unspent to the tune of 40 to 50%. And that Time over. Time over. Time over. No, okay, I cannot allow it. It's all gone. It will not be recorded. Okay. Sardar Sukhdev Singh Dinsa. Sardar Sukhdev Singh Dinsa. Yes, all those associate name may be added. Thank you, Deputy Chairman, sir. All India Radio broadcasts several central news bulletins in prominent Indian languages. These news bulletins are still prime source of information for majority population. System of keeping regional news bulletins of languages in state capital news units and central news bulletins at its headquarters in Delhi was evolved and approved by Sardar Vallabhbhai Patel, first I and B Minister of the country. During his tenure, Central News Bulletin in 6 languages, Assamese, Dogri, Kashmiri, Malayalam and Punjabi were started from Delhi when it was almost impossible to get regional languages persons. Mobility in country was comparatively very low and there was no permanent post of news readers. Prasar Bharati, as per reply given to Lok Sabha by MOS in MIB Colonel Rajvardhan Rathore, in an unstarred question number 2159 on 15th March 17, Indian language news bulletins are being shifted of 4 news units, i.e. Assamese, Odia, Malayalam and Tamil Nadu has already been ordered. This decision of Prasar Bharati is detrimental to national identity of these languages as well as quality of these central news bulletins. Last minute news item cannot be incorporated in these bulletins from New Delhi to state capital, since nothing good is expected from this move. I therefore demand immediate and total reversal of throwing these languages units out of from the national capital. Thank you. Sri Motilal Vora. उपसभापति महोदय, मैं दिनांक 24/3/2017 को राज्यसभा में अवलंबी लोक महत्व के विषय को उठाने की अनुमति चाहता हूँ। मध्याह्न भोजन योजना व एकीकृत बाल विकास योजना को आधार कार्ड से जोड़ा जाना। राज्य सरकार पहले तो आधार कार्ड का विरोध करती रही और इसे अनावश्यक करार देती रही, किंतु अब सरकार द्वारा बच्चों के लिए चल रही मिड डे मील योजना
और एकीकृत बाल विकास योजना के लाभार्थियों के लिए ये आवश्यक कर दिया गया है कि उनका आधार कार्ड हो। सरकार की घोषणा के अनुसार मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइया सहायकों के साथ ही छात्रों के लिए इस सुविधा का लाभ लेने के आधार कार्ड होना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें मिड डे मील नहीं मिलेगा। मिड डे मील योजना शुरू करने का मूल उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल लाया जा सके। इस योजना में इस समय लगभग 12 करोड़ बच्चे पंजीकृत हैं। लगता है कि सरकार ने इस योजना से बच्चों को अलग करने का मन बना लिया है, अन्यथा एक एक स्कूल में आधार टीम भेजकर छात्रों व अन्य के आधार कार्ड तैयार कराए जाते ताकि उनकी वास्तविक संख्या का पता लग सके। सरकार का कर्तव्य है कि वह गरीबों से सबसे गरीब और को रोजगार दे ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके, किंतु सरकार 100 दिन की रोजगार योजना को भी ठप करना चाहती है, इसलिए इसे आधार से जोड़ने का निर्णय लिया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और गरीब लोगों और गरीब बच्चों के लिए जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार के समय से चल रही थी उन्हें यथावत जारी रखें। Javadekar, Minister wants to react. No, listen, Minister wants to react. What is your reaction? Minister, you can say. मैं सबको ये बिल्कुल अधिकृत रूप से बताना चाहता हूं कि किसी को भी मिड डे मील से छात्रों को वंचित नहीं रखा जाएगा। सबको मिड डे मील मिलेगा और सबको आधार कार्ड भी मिलेगा। बहुत छात्रों के पास है, जिनके पास नहीं है उनको वहां सुविधा भी दी जाएगी। अगर जिनके पास वहां सुविधा भी नहीं है वहां राज्य सरकार एक उनको यूनिक नंबर देगी और ये पहल शुरू होते ही जो छात्रों का बोगस नाम रजिस्टर करके चोरी करते थे उसमें कमी आने लगी है। Okay, all right. Only one clarification from the minister. Sir, because अभी clarification का टाइम नहीं है. simple clarification. I think he is in a position to reply. He says no problem. Because because later, as per the latest stand of the government, as it has been reported in the newspapers, that not only Aadhaar card of the children is required, the Aadhaar cards of the people who are cooking the food, He has denied all their this. Aadhaar card is also required. ऐसा कुछ नहीं ये बोलते हैं. Okay. आधार कार्ड नहीं है, No. ऐसे छात्र को Minister is very clear. मिल मिलेगा। Minister लेकिन is- सबको आधार कार्ड भी मिलेगा। लेकिन सबको मिड डे मील मिलेगा. That is all. श्री नरेंद्र बुधानिया, तबन जी बैठिए, सबको मिलेगा. तबन जी बैठिए, सबको मिलेगा. फिर क्या चाहिए बुधानिया? आपको भी मिलेगा अगर चाहिए. बुधानिया. No, I am not allowing only Jara Ramesh, only Budania. Jara Ramesh, I have not allowed you. Yeah. No, Budania, Sri Budania ji. Nobody else. Sri Budania. Your own member. Jara Ramesh, I have not allowed you. Sit down. Sri Budania. Why Jara Ramesh? Your own member. You are disturbing your own member. सर, हमारे देश में बैठिए. हमारे देश के 125 करोड़ की Now only what Budania says will go on record. हमारे देश की 125 बोलिए. करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो ओबीसी का है और इसका प्रतिशत जो है अरे वो तो 52% अश्योरेंस आया है, इसका क्या जरूरत है? जीरो है सर, ये दिया हुआ। ओके बोलो. ये बीच में तो दूसरा बोलिए. सर 52% से ज्यादा हमारा ओबीसी वर्ग है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुख्य धारा में नहीं है। 70 वर्षों में केलकर मंडल कमीशन बने, लेकिन आज मैं ये कहते हुए दुख होता है कि आज हमारे इस ओबीसी वर्ग के एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में आज हमारी स्थिति नगण्य के बराबर है, जीरो के बराबर है। महोदय,
आज ये वर्ग जो इस देश की जीडीपी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, अपना खून और पसीना बहा करके ये अपने देश की जीडीपी को बढ़ाता है, और आज इस वर्ग के साथ अनदेखी होती है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कहना चाहता हूं कि सभी पार्टी के लोग जो इस वर्ग से जुड़े हुए हैं, ये बहुत लंबे समय से ये कुछ इस मांग को उठाते रहे हैं। मुझे याद आता है सर, 1993 में जब नरसिंहा राव सरकार बनी थी, तब जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था, और संविधान में साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। बोले मेरे पास में संविधान है, इसके अंदर धारा 340 में साफ लिखा हुआ है। महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो है सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हालांकि दर्जा दिया है, लेकिन मेरा जो 0 वोट लगा था कल, तब तक ये बात सामने नहीं थी। महोदय, ये क्रीमी लेयर कहां से आ गया? आज क्रीमी लेयर की वजह से ओबीसी के लोगों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। महोदय, आज जो है इसको क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर ये कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है। महोदय, ये गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का। आज हमारी क्या हालात है, हम लोगों जो ओबीसी वर्ग के लोगों की है, लोग चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, पास में नहीं बैठने देते थे, ओके, छुआछूत थी। आज ऐसे टाइम ओवर। Yes, all names will be ordered. All names will be ordered. Srimati Jaya Bachchan, absent. Jaya Bachchan, absent. Srimati Kanimori. Srimati Kanimori. Sir, Mercury thermometer factory which was set up in Kodaikanal was closed down in 2001. And the Hindustan Unilever factory later admitted that more than 20 tons of mercury may have been lost to the environment because they did not clean up after they closed down the factory, of which 1.3 tons were discharged into the forest. Mercury is very poisonous, and residents who are living around that area have complained of high sickness rates, mortality and kidney related ailments. There is a fear that the lake in Kodaikanal will is getting contaminated, and more than that, children born in that area are affected, and because the forests are contaminated, when there is rains, the mercury, there's a fear of mercury flowing into the Vaigai river, and it will affect people who live down the Vaigai river, and agriculture and everything can get contaminated. So the factory is insisting on a cleanup of 20 mg of mercury per kilogram of soil. But the international standards are around 1, and the Canadian standards are around 6.6 mg. And we've heard that the government is allowing that 20 mg of mercury cleanup per kilogram of soil is okay. This is not a safe standard at all. There is a lot of fear among environmentalists and the residents of that area that if this is a thorough, a clear process is not done, there's a lot of fear that it will affect the future generations and the entire area. So until now, there's not been much clarity on the procedures of recommendation for contaminated sites. But in January 2016, the Central Pollution Control Board has published a report titled Guidelines for Implementing Liabilities for the Environmental Damages Due to Handling and Disposal of Hazardous Waste and Penalty. This has to be followed. And the guidelines require a levying of penalty amount also. Why has this not been levied on the Unilever company? Thank you. Okay, thank you. Very important point. Yeah, agreed. Sri Mahendra Singh Mehra. Mahendra Singh Mehra, it's an important point. I know it's very poisonous. The point is very important. Government should take note of it.
Government should take note of का it. सृजन हुआ, परंतु आज Minister भी is not there. हमें उत्तराखंड में अपने No. संपत्तियों का, परिसंपत्तियों का अधिकार No, आज he's भी not नहीं there. मिला। Environment और minister is जबकि not there. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में साफ लिखा हुआ है कि जब राज्यों का बंटवारा होगा तो वहां की चल अचल संपत्ति जिस राज्य में रहेगी उसी को उसको अधिकार मिलेगा। परंतु तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के सामने इतनी ज्यादती की कि आज टेहरी में इतना बड़ा टेहरी डैम बना जिसमें 24 मेगावाट बिजली पैदा होती है। आज सारा अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है। 14,000 से अधिक कार्यालय तथा भवन आज सारे उत्तर प्रदेश के अधिकार में है। 13,000 हेक्टेयर जमीन इरिगेटेड लैंड सारे उत्तर प्रदेश के अधिकार में है। 3 बड़े बड़े बैराज आज उत्तर प्रदेश के अधिकार में हैं। कई झील और आवास सब उनके अधिकार में हैं। यही नहीं, 31 नहरें जिनका हेड और टेल उत्तराखंड में है, आज भी वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हक हकूक, हमारे परिसंपत्तियों का निपटारा शीघ्र करें। जबकि हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं, आज तक उत्तराखंड के साथ ये ज्यादती होती रही। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अति शीघ्र हमारी परिसंपत्तियों में उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें उत्तराखंड का अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला उठाना चाहता हूँ जैसे I don't know whether 2017 की है, time over, you repeat the notice. 2.5% GDP You repeat the notice, time over. मैं कह रहा हूँ You repeat the दोबारा notice. उसके लिए Repeat करो, time over. ओके ठीक है सर, थैंक यू।